The forever war between the genders refuses to resolve itself. After the #MeToo campaign, the latest controversy to have hit the media in this regard is the new Gillette ad. The title, "The Best a Man Can Get," is over 30 years old. But the content of the new piece of advertising is very current. It concerns the argument of male persons being excused for bad behavior on the grounds that boys will be boys, and places the onus of teaching on men themselves. Boys, the ad says, ought to be taught by their older counterparts to not seek recourse in violence, harassment and invective, especially against women but also against each other. There is in the video a nod to the #MeToo campaign, acknowledging the fact that women have forever been harassed and violated, and the persons conducting such activities have been excused. But also to be found are latent references towards men's responsibility towards parenting, presenting an example, and chivalry. Boys having a scrum ought to be reprimanded, the ad says, and the persons who can do that are their role models and mentors. Curiously, there seems to have been more criticism of the ad than praise. All of this subject matter would appear proper and fitting to any right-thinking individual, one would assume. Curiously, though, there seems to have been more criticism of the ad than praise. Notwithstanding the many men and women that shared the video on the social media, the dislikes were in greater numbers by the thousands. The central idea of the advertisement being toxic masculinity, perhaps it is hardly surprising that many persons across the world found it projecting emasculation and relegating male persons to a lower, perhaps more feminine stature. The fact, however, is that the company has achieved a world of good, within a limited sphere, of course, by putting out this ad, acknowledging that the transgression against rights of any person is outside the limits of acceptable behavior. Boys, it ought be assumed, will not and should not be excused on the basis of gender and stereotype. The rules of good manners are rigid and well known, and they must not be slowed to be breached. Further, rather than female persons taking it upon themselves to shrilly forward the cause, it is the thinking male persons themselves who must educate and civilize their younger counterparts, better sooner than later. In a country such as Pakistan, though, with high rates of violence against women, a deeply patriarchal and misogynistic society, and regression that appears to know no bounds, the ad may seem to have no relevance. That, however, is very far from being the case. Arguably, it is precisely such milieus that present that most urgent need for being made to be self-aware, in addition to knowledge of the recognition of basic human rights, regardless of gender, and the responsibilities that come with it. Women in modern Pakistan do, undeniably, have a hard time. Leave aside crimes such as honor killings, and the practice of domestic violence, egregious matters of which nightmares are made. Consider, in their stead, another basic reality. As urbanization and inflation grows, the number of women attending college increases, and the participation of females in the workplace adds up. This scenario comes with its own challenges, such as taking the bus or being in a public space, and hence at the mercy of men who harass them. Suffice it to say, then, that ad campaigns such as that put out by Gillette, a corporate, for profit though it may be, are essential for chipping away at hidebound ideas, improper understandings of masculinity, the lack of the ability to understand concepts of human dignity, and the necessity for the genders to exist in mutual respect. As the ad quite correctly points out, boys ought not be excused for ill behavior on these grounds, and the onus falls primarily on their older counterparts to wean them into the practices of the men they should one day become. The fact that the advertisement under debate has drawn such opprobrium from people across the world, one cannot conclude whether they were all male, means that toxic masculinity is a global problem, hardly restricted to any region or country. The tug of war between the genders is as old as humanity itself, and there is no doubt that women have always had the worst of it, even if some of them have been at some point complicit. A hard-nosed corporate reality though it may be, the company has done a good job, one that deserves appreciation and resolve. Of the many male persons that watched and then reacted to it, it is earnestly to be hoped that at least some will dwell on what is often referred to as the order of things, and take steps to change it. The writer is a member of staff.
Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. सिन्फोहे के दरमियान हमेशा की जंग खुद ही हल होने से इनकार करती है। मुहिम के बाद इस हवाले से मीडिया में ताज़ा तरीन तनाज़ो है। जिलेट का नया इश्तिहार है। दी बेस्ट ए मैन कीन गेट का उन्वान 30 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन इश्तिहारात के नए टुकड़े का मवाद बहुत मौजूदा है। इश्तिहार में कहा गया है कि मर्दों को बुरे बर्ताव के लिए इस बुनियाद पर मुआफ किया जाता है कि लड़के होंगे और तालीम देने की जिम्मेदारी खुद मर्दों पर डाल दी गई है। इश्तिहार में कहा गया है कि लड़कों को उनके पुराने साथियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वो तशद्दुद, हरासानी और बदसलूकी का सहारा ना ले, खास तौर पर ख्वातीन के खिलाफ बल्कि एक दूसरे के खिलाफ भी। वीडियो में मुहिम की हिमायत करते हुए इस हकीकत का एतराफ़ किया गया है कि ख्वातीन को हमेशा के लिए हरासा किया गया है और उनकी खिलाफ वर्जी की गई है और ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने वाले अफराद को मुआफ कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा परवरिश के तय मर्दों की जिम्मेदारी, एक मिसाल पेश करने और शाइस्तगी के बारे में पोशीदा हवाला जात भी पाए जाते हैं। इश्तिहार में कहा गया है कि इस करम रखने वाले लड़कों की सरजनिश की जानी चाहिए और जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो उनके रोल मॉडल और सरपरस्त हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि तारीफ से ज्यादा इश्तिहार पर तनकीद की गई है। यह तमाम मौज़ूआत किसी भी सही सोच रखने वाले शख्स के लिए मुनासिब नजर आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस इश्तिहार पर तारीफ से ज्यादा तनकीद की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले बहुत से मर्दों और ख्वातीन के बावजूद नापसंद की तादाद हजारों में ज्यादा थी। इस इश्तिहार का मरकजी ख्याल जहरीली मर्दांगी है। शायद इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि दुनिया भर में बहुत से लोगों ने मर्द अफराद को कमतर, शायद ज्यादा निस्वानी कद पर पेश किया। ताहम हकीकत यह है कि कंपनी ने इस इश्तिहार को शाये करके एक महदूद दायरे के अंदर एक अच्छी दुनिया हासिल की है, ये तस्लीम करते हुए कि किसी भी शख्स के हुकूक के खिलाफ वर्जी काबिल कबूल तर्ज अमल की हुदूद से बाहर है। ये फर्ज किया जाना चाहिए कि लड़कों को सिन्फ और दकियानूसी सोच की बुनियाद पर मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। अच्छे आदाब के उसूल सख्त और मरूफ हैं और उनकी खिलाफ वर्जी करने में सुस्त रवि नहीं होनी चाहिए। मजीद बरा ख्वातीन अफराद की बजाय कि वो इस मकसद को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, ये सोचने वाले मर्द अफराद हैं जिन्हें अपने नौजवान हम मनसबों को तालीम और मुहज़्ज़िब बनाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद की शरह बहुत ज्यादा है, पिदरशाही और ख्वातीन से नफरत करने वाला मुआशरा है और रजत पसंदी जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा लगता है कि इस इश्तिहार की कोई अहमियत नहीं है। ताहम ऐसा होने से बहुत दूर है। बिलाशुबा ये बिल्कुल ऐसे माहौल हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक, सिर्फ सिरकत नजर और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में इल्म के अलावा खुद को बाखबर बनाने की सबसे ज्यादा फौरी जरूरत पेश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जदीद पाकिस्तान में ख्वातीन को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। गैरत के नाम पर कत्ल और घरेलू तशद्दुद जैसे जराइम को छोड़ दे जिनके बारे में डौने ख्वाब बनाए जाते हैं। उनकी जगह एक और बुनियादी हकीकत पर गौर करें। जैसे जैसे शहरकारी और इफरात ज़र बढ़ती है, कॉलेज जाने वाली ख्वातीन की तादाद में इजाफा होता है और काम की जगह पर ख्वातीन की शिरकत में इजाफा होता है। ये मंजरनामा अपने चैलेंजों के साथ आता है, जैसे बस में सवार होना, अवामी जगह पर रहना और इस तरह इन मर्दों के रहम व करम पर जो उन्हें हरासा करते हैं। लिहाजा ये कहना काफी है कि जिलेट की जानिब से पेश की जाने वाली इश्तिहारी मुहिम्मात, जो एक कारपोरेट मुनाफा बख्श हो सकती हैं, पोशीदा ख्यालात को छुपाने के लिए जरूरी हैं। मर्दांगी के बारे में गलत तफहीम, इंसानी वकार के तसव्वुरात को समझने की सलाहियत का फुकदान और बाहमी एहतराम में सिन्फोहे के वजूद की जरूरत। जैसा कि इश्तिहार में बिल्कुल दुरुस्त तौर पर निशानदेही की गई है, लड़कों को उन बुनियादों पर बुरे बर्ताव के लिए मुआफ नहीं किया जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर उनके पुराने हम मनसबों पर आयद होती है कि वो उन्हें उन मर्दों के तर्ज अमल में शामिल करें जो उन्हें एक दिन बनना चाहिए। हकीकत यह है कि ज़ेर बहस इश्तिहार को दुनिया भर के लोगों की जानिब से इस तरह की तनकीद का निशाना बनाया गया है, कोई भी ये नतीजा अखज़ नहीं कर सकता है कि आया वो सब मर्द थे। इसका मतलब है कि जहरीला मर्दांगी एक आलमी मसला है
जो शायद ही किसी खित्ते या मुल्क तक महदूद है। सिनफोहे के दरमियान रस्साकशी इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानियत, और इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वातीन को हमेशा इसका बदतरीन सामना करना पड़ा है, भले ही उनमें से कुछ किसी न किसी मौके पर मुलव्वस रही हों। एक सख्त कारपोरेट हकीकत अगरचे ये हो सकती है, कंपनी ने एक अच्छा काम किया है जो तारीफ और अज़्म का मुस्तहिक है। बहुत से मर्दों में से जिन्होंने इसे देखा और फिर इस पर रद्द अमल जाहिर किया, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कम अज कम कुछ लोग इस चीज़ पर गौर करेंगे जिसे अक्सर चीज़ों की तरतीब कहा जाता है, और इसे तब्दील करने के लिए इक़दामात करेंगे। मज़मून निगार अमले का एक रुकन है। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.